So what's up everyone, hope you guys are doing well. Once again welcome back to channel and welcome back to another part of Mumbai vlog. So first of all, जिन लोगों ने मुंबई व्लॉग का पार्ट 1 देखा नहीं, ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, सो प्लीज़ डू वॉच इट. सो अभी हम बात करते हैं जिन लोगों ने मुंबई व्लॉग का पार्ट 1 देखा है. ऑब्वियसली वो लोग जानते होंगे कि व्लॉग के एंड में मैंने कहा था कि इन अपकमिंग पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर बुलेट राजा बाइक्स. सो यह व्लॉग में आपको कई सारी सुपर बाइक्स देखने मिलने वाली है. सो कोई बाई चांस पसंद आ जाए तो जाइए बिंदास एंड परचेस इट. So without wasting time, let's go. Here we reach to Bullet Raja Bikes. So basically on ground floor you will get to see a huge lineup of Royal Enfield bullets. So now we are going to first floor because Superbike department is on first floor. Guys, one thing I like to mention that please use this staircase very carefully जब भी आप बुलेट राजा बाइक्स आओ, because इनको चढ़ना यानी कोई माउंट ट्रैक करने से कम नहीं है. So, जैसे हम स्टेयरकेस चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गए तो ऊपर जाने के बाद कुछ ये सीन था. सुपर बाइक्स का बफे लगा देखकर मानो मज़ा आ गया एकदम. एंड सामने ही खड़ी थी स्ट्रीट 675. जैसे ही मैं ट्रियम 675 के जस्ट लेफ्ट साइड में टर्न करके देखता हूँ तो क्या है, बेंटली 600i का पूरा लाइनअप लगा हुआ था, वो भी पूरे तीनों कलर वेरिएंट के साथ, रेड, वाइट, ब्लैक. एक्चुअली सीन ये था कि स्टॉक फुल होने के कारण स्पेस काफ़ी कंजेस्टेड थी, तो मैं बेंटली 600i पे बैठ नहीं पाया. बट बेंटली 600i के जस्ट राइट साइड में डुकाटी स्क्रैम्बलर थी, वो भी दोनों कलर्स में, ऑरेंज एंड येलो. So when I was exploring all those super bikes, in that meanwhile one more super bike added in the stock, and that was Harley Davidson Custom Glide. So immediately I stepped down from Ducati Scrambler and ran towards the Harley, and that bike was really in amazing condition. After exploring near about whole stock, when we came back to ground floor, a very big surprise was waiting for me, and that was one more super bike was waiting to get added in the stock, and that was Ducati Monster. Actually in present time Ducati Monster is not available in its showroom too, but it was my good fortune that I found it in Bullet Raja Bikes only. So this was second part of Mumbai vlog. So hope so that you love to watch both part of this vlog. So it's time to end up this vlog here. So if you like this vlog, don't forget to like, share and comment. And if you are new to the channel, don't forget to press the subscribe button, press the bell icon. So meet you in such a new vlog. Till that, have fun.